guys, this is Nia Sharma. Welcome back to my YouTube channel. Yay! Yes, I know I am coming back after a long sabbatical. I was busy in my house emergency. तो आज मैंने सोचा कि कुछ नया लुक क्रिएट करते हैं बिकॉज जो कुछ कोलैबोरेशंस मेरे पास आए थे मुझे उनका वीडियो शूट करना था. तो आई थॉट लेट्स shoot it with you guys because I was experimenting with my look because I've never done oily hair, so today I have done this. I hope so it's looking good on me. I know it's little I've never done it, so देखते हैं कैसा लगता है. So today we are going to create very neutral, basic and fresh face, like nude जो आजकल चल रहा है and it's very much in trend. And I personally love to do all this kind of looks, very neutral, एकदम basic makeup which I love to do in my daily basis. So let's try and let's see कि मैं ये लुक कैसे क्रिएट करती हूँ. सो सबसे पहले जब भी आप न्यूड मेकअप जब भी क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट मेक श्योर दैट आपकी स्किन जो है वो प्रॉपरली एकदम प्रिपेयर्ड हो मेकअप करने से पहले. सो मैंने ऑलरेडी अपना स्किन केयर से आई एम डन. नाउ आई एम गोना डू my skin prep before I apply the foundation. So the basic steps has to be a primer. न्यूड मेकअप जब भी हम अप्लाई करते हैं ना तो आपका स्किन जो है वो बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए. एंड मैंने अपने बाल इसीलिए पीछे बांधे हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू हाईलाइट द फेस. सो दैट्स वाई आई थॉट दैट let's create this look with you guys. Okay, so now I'm gonna use this Farsali liquid glass because we want our face to look really nice. And I always ये जब भी मैं लगाती हूँ तो मेरे फेस से गिरता ज़रूर है. I really love this product. It's really nice. Because when you do makeup ना so आपका स्किन प्रेप कितना अच्छा है वो आपके मेकअप को हाईलाइट करके दिखाता है. सो दैट्स वाई आपका फेस जो है पूरा अच्छे से क्लीन होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो अगेन आई एम गोना यूज़ फरसाली का लिक्विड ब्लर. I'm just gonna do here only because I have little open pores here. So जहाँ से आपको अपनी स्किन थोड़ी ब्लर करनी हो, I think that is the correct area to put this product. Just tap your product into your skin, so that's why it's gonna look really nice. Okay, and I'm using Benefit का Pore Professional. You just have to take a little bit, not much. So I'm gonna use this product right here because I have open pores here and on the nose. This pore filler, I love this pore filler. It's really nice, you guys. Really nice. Okay, so we are done with the skin prep. I think it's looking properly fresh and nice. One step I'm gonna add in this, which is this MAC primer. So आप इसको like मेकअप के बाद भी लगा सकते हैं, but I want कि मेरी स्किन बहुत ग्लोई दिखाई दे और अच्छी दिखाई दे. That's why I'm using this before applying the makeup as well. So instant shine, instant. So I'm using MAC foundation because I think मैंने ट्राई किया है दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, but I love this product a lot. बहुत सारा आ गया. सो फाउंडेशन आपको सिर्फ डॉट ही चाहिए होता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. सी आई एम गोना अप्लाई डॉट जहाँ पे मुझे लगता है कि आई नीड अ लिटिल नाइसर कवरेज, सो वहीं पे लगा.
आप ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कीजिए बिकॉज द नाइसेस्ट थिंग, इट ब्लेंड्स रियली वेल. सी, एक फाउंडेशन से ही इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है फेस पे. सो अब आई एम गोना यूज़ द कंसीलर. आई यूज़ क्रीम कंसीलर. ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है. आई जस्ट गोना यूज़ ऑन द आई एरिया ओनली बिकॉज़ मेरा फेस जो है काफ़ी क्लीन है, तो मुझे और कहीं ज़रूरत है नहीं वैसे कंसीलर की. अगर आपको आपके फेस पे कहीं पे भी कवरेज की ज़रूरत पड़ती है तो इट्स जस्ट मेक श्योर दैट यू डू अप्लाई. अगर आप यहाँ पे एक हल्का सा स्पॉट है तो आई एम गोना करेक्ट दैट. इधर भी ज़रूरत है. So basically the funda is the face has to look really fresh, nice and clean. So this is the canvas that हमने जो ready किया है. It's properly cleaned. It's looking fresh. So अब हम इसमें से थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, लेकिन कलर ऐड करने से पहले contouring is very important. मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट हाईलाइट थोड़ा इफेक्ट आए. सो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस. ये दोनों चिक में एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, एक इल्यूजन आएगा दैट आई हैव अ हाई चीक, सो विच आई लाइक. अगर आप ऐसे राउंड कटिंग कर रहे हैं तो नाक के पास मत ले जाना वरना बहुत बुरा लगेगा. आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट दिस basic highlighting effect on my face. That's all. Now I'm gonna use a blush. La, la, la. इसको भी मैं सर्कुलर मोशन में ही करूँगी बिकॉज हमने जो जैसे कटिंग करी है वैसा ही हम हाइलाइटर लगाएंगे. That's all we need. So now eyes are very 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 important. So we're gonna do eyes. बट आइज़ को भी हम न्यूट्रल ही रखने वाले हैं, सो हम कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करेंगे. सो आई एम यूजिंग दिस. which one should I use? Very basic thing I'm using over here. अब कोई भी ऐसे शिमरी कलर यू कैन यूज. I love shimmer, so that's why it's gonna look really nice. मैं आई शेडो हाथ से ही लगाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज इट्स ईजी एंड इट सेव्स टाइम. So I think we are done here. Yeah. So अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे जो न्यूड मेकअप के लिए होती है, दैट इज़ योर आईब्रोज. Your eyebrows has to be on point. I think it's looking really nice. And I have to set my makeup now. With powder.
That's all. So now I have set my makeup also. Abhi I'm gonna use mascara. I think the key for a glowy makeup is mascara, because your eyelashes, see, it's gonna give really nice effect. I am done. One little bit thing I will do, definitely I will do, which I love applying a slightest brown line under the eyes. I'm using a lip liner. You can use anything. Eyeshadow also you can use. And I'm going to use very neutral color on my face. I'm using Huda Beauty lip contour flirt. So instantly your lips look very fuller. Now what I want to do, I'm using MAC top, I guess. Just a little bit. I think न्यूड मेकअप के हिसाब से लिपस्टिक जो है वो शार्प है. So my lips also done, and I'm gonna use a little lip shine on my face. Yeah, so lip shine is done. Now the final step that we have to do is very important in a nude makeup that you're gonna do is highlighter. Very important. You can use cream or powder. Because you're creating. See, it's looking so nice. Ooh, how beautiful it's looking. I think every step is done, and I'm ready to go for any brunch or makeup shoot that I want to do. I think it's looking really nice. I really like this look. Woohoo! We are done with this look. See, it's looking really nice. Very basic, neutral, not over the top, but still you're looking very presentable with this. So yeah. So अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी ऐसी वीडियो जो है चाहते हैं कि मैं बनाऊं. सो या कीप मोटिवेटिंग मी. थैंक यू.